Hello everyone, welcome back to the Third Man Cricket Show with me Abhinav Mishra and मेरे साथ आज जुड़ गए हैं हर्षल गारिया and अंकित सालुंके, two important members of the Third Man family. Welcome Harshal, welcome Ankit. Lot to talk about today in this stream. I think the game is still going on. India 101 for no loss 14 ओवर में. बात करेंगे पूरे गेम के बारे में, धीरे धीरे डाइसेक्ट करेंगे छोटी छोटी चीजों को. एंड देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एज वेल, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे. सो जो भी स्ट्रीम पे जुड़ने वाला है, अभी जुड़ रहा है या बाद में जुड़ने वाला है, दोबारा रिप्ले में देखने वाले हो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, डू द नीडफुल एंड जस्ट मेक योर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, जैसे मैं कह रहा हूँ बस. हर्षल, अंकित, व्हाट डू यू मेक ऑफ द गेम? फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड वी स्टार्ट बाय सेइंग a big effort by team Nepal? The way Nepal has come in the last 1 or 2 years as a cricketing side, it's so good to see, so heartening to see, putting on 230 on board against a quality India attack. What do you make of the effort, Ankit? Harshal, बताओ अपने अपने views यार. I think brilliant fight back, and if you see like Afghanistan को भी हमने over the years ये देखा कि they kept on playing good cricket for a while, bilateral series and all, then multi-nation tournaments like Asia Cup, and आप एक दो मैचेस जीतते हो, and this is the kind of confidence you, and I think नेपाल के लिए I think एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ quality bowling attack, इंडिया के सामने बैटिंग अटैक भी अच्छा, बॉलिंग अटैक भी अच्छा, so this gives them the confidence. And वनडे का फॉर्मेट है, आई थिंक ओवरऑल तो मार्जिन बहुत कम होता है जीतने का, बट एफर्ट मैटर्स, एंड बैटिंग में आई थिंक खास करके दे इम्प्रेस अ लॉट. बट थैंक्स टू आवर फील्डिंग एज वेल, लाइक काफी कंट्रीब्यूशन था उनके. 230 बनने में हम लोग ने बहुत खूबसूरत मदद की, सो कुडोस टू अस एज वेल. Yeah, we'll talk about that as well. Harshal, what are your views? कैसा लगा the first 10 overs? क्योंकि मैंने जब सुबह देखना शुरू किया था, मुझे लगा था कि it could be a one-sided game, one-sided start. But the way the openers batted, क्या नाम था? Asif Sheikh and Kushal Bhurtel, if I'm not wrong. These two guys. Yeah. 10 overs, 70 odd or something मैंने score देखा था. And great shots यार. I think, to be honest, proper cricketing shots. Yes, हमने थोड़ी मदद तो करी उनकी fielding wise. But overall, what is your views on Nepal's effort? Yeah, they just got bundled out for 104 against Pakistan in the first game, and I was not that much optimistic that they would play this type of a innings for them. I was thinking like, yeah, 120, 130 chase करने को मिलेगा इंडिया को, it would be an easy win, but they showed fight, and वही आपको चाहिए रहता है ऐसे ऐसी टीम्स के साथ. वही एक एशिया कप आपको देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है ऐसी छोटी टीम्स को. हमने देखा है कि पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी टीम्स आई है एशिया कप में आके, उन्होंने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए. हमने बांग्लादेश को बहुत बार ऐसा देखा था 2000 में, 2010 में, कि वो हमेशा आके सरप्राइज करते थे एशिया कप में हम लोग को. कभी भी वो एक फेवरेट्स नहीं होते थे, लेकिन हमेशा सरप्राइज करने का एक उनमें मुद्दा रहता था. तो आज भी अगर आप देखो तो नेपाल ने बहुत ही अच्छा खेला, बट इंडिया इज इंडिया. मतलब भले आप कितना भी खराब दिन क्यों ना हो इंडिया का फील्डिंग में, बॉलिंग तो आपकी मदद कर ही देगा. और आज द वे रविंद्र जडेजा ने भी बॉलिंग की है, हाँ ये नेपाल है, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है आज. सो इट्स बीन अ ब्रिलियंट गेम फॉर नेपाल. बहुत सारी लर्निंग्स मिल रहेंगे उनको आज एक क्वालिटी इंडियन साइड के सामने खेल के, वो एक्सपीरियंस भी मिला रहेगा. एंड होप फॉर गुड फॉर देम मैन, और ज्यादा आगे देखना पसंद करेंगे इनको. Yeah, sure. I think after they got bundled out, 230 पे all out हो गए थे, then I think Asif Sheikh, who scored a good 50, an enjoyable 50 for Nepal. He mentioned कि they were targeting 240, 250 around at one point. So I think reaching 230 was what Team Nepal would have taken in the at the start of the game. So anyways, moving forward, India की बैटिंग शुरू है. अगर स्क्रीन पे मैं स्कोर प्रेजेंट कर सकूं तो देखते हैं. एंड यस अक्षत, आई हैव सीन योर कमेंट, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो 111 फॉर नो लॉस, 34 रन चाहिए खाली, और इन हाउ मेनी बॉल्स, 50 बॉल्स, वो तो बन ही जाएंगे आई थिंक. बट या, गुड नेट सेशन आई वुड से फॉर आवर ओपनर्स, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल टू कम बैक इन फॉर्म यार. क्योंकि पाकिस्तान के सामने हम लग रहा था कि वी आर सो आउट ऑफ फॉर्म, or Pakistan dominated our opening batters in the first game itself. So good innings, Ankit. Good innings, Harshal, for Rohit Sharma first of all. Hi, yeah, I mean, as you mentioned, I think we can't say net practice. I think that I guess लग तो will वही रही है be यार, मतलब kind of because I think
बिफोर गोइंग टू अ बिग गेम आई थिंक गौतम गंभीर ने एक्चुअली एक अच्छी बात कही थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रन्स यू स्कोर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओपोनेंट्स, बिकॉज जो फर्स्ट मैच भी था रेन वॉश था, सो बॉलर्स को उस टाइम इतना प्रॉपर 50 ओवर्स डालने नहीं मिले, एंड दिस मैच यहाँ पे बैटर्स को भी अब दे वोंट बैट 40-45 ओवर्स। अगर हम 230 का टारगेट होता तो शायद बैटिंग ज़्यादा मिलती, बट आई थिंक गोइंग इनटू द पाकिस्तान गेम, खास करके एज यू मेंशन्ड ओपनर्स के लिए आई थिंक ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, एंड गोइंग आगे तो वर्ल्ड कप भी है, सो यू वांट टू एक बार आप वो जोन में चले जाओ तो रन्स बनाना चाहते हो, एंड वनडे फॉर्मेट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेट विच इज वेरी काइंड यार, लाइक आप पहले 10 ओवर संभाल दो फिर तो एक खेल आपका है, लाइक स्पेशली फॉर ओपनर्स बिकॉज यू गेट सेटल्ड बॉल भी, फिर आपने नया बॉल टैकल किया होता है, देन स्पिनर्स का हम 4 ही फील्डर बाउंड्री पे होता है, गेम चलाना होता है बेसिकली, सो दैट्स द थिंग। सो ओपनर्स के लिए कॉन्फिडेंस मिल गया तो ये तो अच्छा है, लाइक अभी तो आई थिंक बैटिंग भी नहीं आएगी, लाइक विराट कोहली के आए भी तो 15-20 रन चाहिए होंगे, आई डोंट थिंक नहीं सो। आएगी, मेरे को नहीं लगता ओपनर्स है। के लिए अच्छी प्रैक्टिस। Yeah. Harshal, what do you make of Rohit Sharma's innings? I think looking in good touch. और आई थिंक रेन ने भी काफी हेल्प करी। आई मीन ये नहीं कह रहा कि अगर रेन नहीं आती तो हम हार जाते मैच, बट ओवरऑल आई वुड से the batting got a bit more easier after the rain started falling down. एक टाइम पे तो लग नहीं रहा था मैच होगी, but commendable effort once again from the ground stuff. I think we have to first of all notice what work the ground staff has done in Sri Lanka throughout these games, क्योंकि हालांकि वॉश आउट हो रहे हैं बट दे हैव स्टिल मैनेज टू गेट द गेम ऑन जब भी पॉसिबल रहा है। सो वर्ड ऑन दैट। एंड उसके बाद शुभमन गिल रोहित शर्मा की पार्टनरशिप दोबारा, आई थिंक मैच तो खत्म हो जाएगा जब तक तू ये आंसर खत्म करेगा। म्यूट पे हर्षद। अगर आप देखा जाए तो बहुत ही अच्छा वो तरह जॉब किया है ग्राउंड स्टाफ्स ने श्रीलंका में, एंड द वे वो क्विकनेस उनको दिखा था, अगर उनको पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है। एंड हम सबको पता है कि श्रीलंका में अगर एक बार बारिश आती है तो बहुत कभी कभी स्ट्रांग बारिश आती है, तो उसके लिए आपको कभी टाइम नहीं मिलता है कि आप जाके पिच कवर करो। तो हमने देखा कभी कभी बारिश नहीं भी हो रही है, डार्क क्लाउड्स हो रहे हैं, फिर भी कवर्स आ रहे हैं क्योंकि उनको प्रेडिक्शन अच्छा खासा हो रहा है। एंड यही चीज है कि ये फोरकास्ट भी है कि आगे जाके जहाँ पे हमारे गेम्स होने वाले हैं श्रीलंका में, वहां पे बारिश प्रेडिक्ट कर की गई है, तो इसीलिए भी वो टॉक्स भी चल रहे कि शिफ्ट करने के गेम्स वहां से, बिकॉज अगर बारिश हो रही है तो पूरा वॉश आउट ही हो जाएगा। ऐसा ऐसा न्यूज आया है, तो शिफ्ट भी हो सकता है वेन्यू, बोलते ना थोड़ा साउथ ऑफ श्रीलंका जा सकता है वेन्यू मेरे हिसाब से। बट कमेंडेबल जॉब बाय द ग्राउंड स्टाफ। एंड अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा शुभमन गिल की, तो मुझे डाउट्स नहीं थे यार। एक गेम उनका खराब गया पाकिस्तान के सामने, एंड एवरीवन वाज साउंडिंग लाइक यार दे आर वेरी बैड प्लेयर्स। रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा, शुभमन गिल इज शुभमन गिल। ये दोनों का अगर आप ये साल देखो तो बहुत ही अच्छा गया है ओडीआई में, साथ में विराट कोहली को भी जोड़ लो तो हाँ एक गेम अच्छा नहीं गया। अगर आप पहला गेम देखो तो स्टार्टिंग में बॉल कितना स्विंग हो रहा था, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि बॉल का स्विंग कितना हो रहा था। अगर हमारे बॉलर्स को भी चांस मिलता वो पिच पे बॉलिंग करने का, तो मुझे लगता कि पाकिस्तान के भी टॉप ऑर्डर टिक पाते हमारी बॉलिंग के सामने। तो ये जजमेंट लाना है आपको बहुत जल्दी से कि रोहित शर्मा बहुत खराब खेला, तो विराट कोहली खराब खेला, शुभमन गिल खराब खेला, कोई खराब नहीं खेला। बैटिंग इजी होती गई जैसे जैसे सन निकलता गया, सन निकला आपका पिच थोड़ा ड्राई होने लगा, स्पिनर्स आए, स्पिनर्स को बहुत ही अच्छे से टैकल किया ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने, और आपने देखा कि वो गेम कंटिन्यू हुआ। और आज अगर आप देखो तो रोहित शर्मा की इनिंग्स बहुत ही परफेक्ट रही है। करण ने बहुत उनको एक ट्रबल किया था स्टार्टिंग में, अगर आप देखो तो फिर उन्होंने चेंज किया, 125 की स्पीड से वो बॉल डाल रहे तो स्टेप आउट करना चालू कर दिया उन्होंने, वो स्विंग को निगेट करने लगे। तो यही होता है एक्सपीरियंस के साथ आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे रन स्कोर करना है। एंड हम सबको पता है एक बार रोहित शर्मा फ्लो में आ गए तो हमको वो लंबे लंबे छक्के देखने को मिलेंगे, हमको वो स्लॉक स्वीप्स देखने को मिलेगा। एंड हम लोग को आज वही देखने मिला, एंड आई होप कि ये फॉर्म कंटिन्यू करते रहे वर्ल्ड कप तक। ट्रू। आई थिंक वो अगर बारिश नहीं भी आती, अगर हम 231 भी चेस कर रहे होते, आई जस्ट फेल्ट कि आज रोहित शर्मा का दिन है। ऑलरेडी यू कैन जस्ट मेक आउट कि एक, बिकॉज इट्स नॉट लाइक he was troubled completely against Pakistan. Yes, Shaheen Afridi did trouble him, but he did hit some good shots as well. I think he was Yeah. looking good, but that was a really, really good delivery to Rohit Sharma. Yes, you Yeah. can say left arm seam is a weakness, but we could see signs that हमें ज़्यादा trouble नहीं हो रहा था start में. He was trying to play out a big inning. So I just feel the signs are good क्योंकि again टर्न अराउंड बहुत कम है। संडे को वंस अगेन वी प्ले पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द सुपर फोर्स, राइट अंकित हर्षल? मतलब Yeah. मेरे को तो संडे मेरे को याद था इसलिए। या सो Hmm. एनीवेज 124 फॉर नो लॉस, 25 मोर रन्स टू विन इन 42 बॉल्स बन तो जाएंगे आराम से। आई थिंक नो लॉस पे बनना चाहिए।
शुभमन गिल की भी 50 हो गई है, सो गुड पार्टनरशिप, 100 ऑड रन की पार्टनरशिप भी हो गई फॉर द फर्स्ट विकेट इटसेल्फ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मूविंग ऑन, let's talk about what Akshat is talking here. Indian squad will be announced for the World Cup tomorrow at 1:30 p.m. Stream होने वाली है, if I'm not wrong, Hotstar and Star Sports पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आई थिंक कैंडी में, जहाँ पे द टीम विल बी एट दिस मोमेंट. सो बिफोर कमिंग टू द वर्ल्ड कप सिलेक्शन, वो तो चल हम कल बात करेंगे पूरे वर्ल्ड कप स्क्वाड की इन डिटेल. I have to talk to you about the India Pakistan game once again and talk about a very crucial position, which is Ishan Kishan. Hmm. Probably for me, that is what I expect from Ishan Kishan or from any number 5 or number 4 batter for Team India. Because that is exactly the kind of innings you expect a player, an Indian player in the middle order to have in pressure situations. जहाँ पे wicket गिर गए 66 for 4. Shubman Gill was struggling a bit at the start, and he did struggle when he got out as well. But that partnership between Ishan Kishan and Hardik Pandya, which was dominated initially by Ishan Kishan, a word on that, and then we'll talk about another topic जो ईशान किशन से रिलेटेड है. हर्षल, Hmm. अंकित, Yeah. किसको भी पहले बोलना है? आई एम द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ ईशान किशन, अगर आपको पता हो तो. मैं यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसाइज किया है ईशान किशन का, लेकिन आई हैव टू गिव क्रेडिट वेरी क्रेडिट इज ड्यू. जो इनिंग्स उन्होंने खेली उससे उन्होंने मेरे को भी रॉन्ग प्रूव किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे रॉन्ग प्रूव किया. एज ए इंडियन फैन, अगर आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है कोई प्लेयर तो बहुत ही खुशी होती है आपको. एंड ईशान किशन की बैटिंग बहुत ही सेंसिबल बैटिंग लगी. जो मुझसे उनसे इश्यूज होते थे, वो इश्यूज बिल्कुल भी उन्होंने वो दिखाए नहीं. वो गेम उन्होंने सेंसिबली बैटिंग की. उनको पता है कब मुझे चार्ज करना है, कब उनको पता है कब मुझे डिफेंड करना है, कब सिंगल रोटेट करना है मुझे स्ट्राइक. एंड हार्दिक पांड्या सामने उसी से बेटर उनको साथ देते रहे. एंड ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एंड दिस मेक्स a very tough decision for Rohit Sharma and team management, whether you keep Ishan Kishan in the 11 or you bring KL Rahul back, because KL Rahul हम सबको पता है कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, और हम सबको पता है कि वो अभी तक एनसीए में ही थे. उनका पता नहीं हम लोगों की अभी वो फुल्ली फिट है भी कि नहीं. एंड कल हम लोग को 1:30 PM को हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा. तो ये मेरे को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है कि एक बंदे जिसका अभी तक फिटनेस भी नहीं हुआ है, क्या वो सीधा वर्ल्ड कप में आप सिलेक्ट कर पाओगे उसको? बिकॉज नाम केएल राहुल बहुत बड़ा है. ओडीआई सर्किट में केएल राहुल द नेम इज वेरी बिग. तो अगर वो सिर्फ वो फिट है तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट अवे वॉक इन कर जाएंगे. तो आई जस्ट होप दैट कि वो जो या 11 इवन में नहीं, स्क्वाड में, सॉरी, स्क्वाड में, ओके, स्क्वाड में, या squad में in 11, the way Ishan Kishan has played, the way Ishan Kishan has shown his form, 4 consecutive 50s in 4 ODIs, that's not a joke. And to play in the two different positions, and he's also the fifth Indian batter to score 50s from 1 to 5th position. So आपको दिखाता है उनके पास वर्सेटिलिटी भी है बहुत ज्यादा. सो आई होप दैट कि वो ईशान किशन को बैक करे थोड़ा बहुत, बिकॉज अभी ईशान किशन आपको एक और डाइवर्शन देते हुए लेफ्ट हैंडर का हमने देखा कैसे वो मोहम्मद नवाज और शादाब खान को बोलते टैकल कर रहे थे. अगर यही राइट हैंडर रहता तो शायद से मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी और दबदबा बना सकते थे, लेकिन लेफ्ट हैंडर के कारण वो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से निगेट कर पा रहे थे. तो मेरे हिसाब से तो अभी ईशान किशन का वो ऊपर है पैकिंग ऑर्डर में केएल राहुल से. यार, क्योंकि अंकित वही बात है ना कि यार जब भी शुभमन गिल का फॉर्म भी थोड़ा खराब चल रहा था, एंड पीपल आर थिंकिंग कि अगर शुभमन गिल का फॉर्म ऐसे चलता है, एंड लकीली फॉर हिम एंड गुड फॉर टीम इंडिया एज वेल, आज रन्स आ गए उनके बैट से भी. बिकॉज अगर आज ये वाली इनिंग्स नहीं आ रही होती, if KL Rahul comes back fit, then would you have, thought about taking Ishan Kishan up the order, opening the batting with Ishan Kishan and getting Rahul at number 5? But I think with this innings, Shubman Gill, anyways, he has to open. I just feel Yeah. वो एक थोड़ा सा खराब सा पैच आ गया था बीच में, वो हर प्लेयर का आता है. But he looks in good touch, seeing the way he's playing today with Rohit Yeah. Sharma. Ankit, what do you make of? तेरा क्या opinion है? I mean, should KL Rahul come back in the 11 directly? Because I agree with Harshal's point कि यार he is not that fit. He's coming after a long break, and it's a big tournament. हम लोग छोटी मोटी टूर्नामेंट bilateral series की बात नहीं कर रहे. We're talking about the World Cup and the Asia Cup का important and later stages. I feel like it's like ये सेम सिनेरियो. आई रिमेम्बर लाइक ईशान किशन ने 200 मारा था एंड वहाँ पे आफ्टर दैट गेम ही वाज ड्रॉप्ड एंड शुभमन गिल को लाया था. सो वहाँ पे तो ये जो कॉम्बिनेशन था लाइक ईशान किशन ने डबल सेंचुरी मारी थी एंड स्टिल ही वाज ड्रॉप्ड लाइक, या फिर शुभमन गिल वाज रिप्लेस्ड बाय हिम. बट आई फील लाइक कि मुझे दोनों चाहिए टीम में, एंड फॉर दैट आई थिंक
see again it comes down दो, कि दोनों का who is the मतलब कौन elephant in कौन the room, दोनों and simply again दोनों it का comes मतलब down to the form of Shreyas Iyer as well. Like एक ही मैच रहा है, but getting out to the way he got out basically, I think वो भी disappointing रहेगा because you don't want to get out on the weakness because वापसी भी कर रहे हैं, but if he gets out and आज तो I guess batting नहीं मिलेगी, but I think the game against Pakistan will be very crucial. But मुझे राहुल and ईशान किशन चाहिए because I want Kishan to actually bat at four because Rahul I feel कि आई गेस आने वाले जो ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस है एंड इवन द सुपर फोर, आई थिंक द सिनेरियो एज ऑफ नाउ इज कि ईशान किशन आपको कीपिंग करते हुए देखेंगे एंड केएल राहुल इज लाइकली टू बी प्लेइंग एज ओनली एज अ बैटर एंड अनलाइकली तो ये भी चीज है कि केएल राहुल वोंट बी प्लेइंग द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो ये भी एक No, no, आर्टिकल no. में I don't think that is सो unlikely. I just feel that is going to happen. But your point, तूने बताया कि यार you want या Ishan Kishan to bat at number 4. या You don't want Shreyas Iyer ahead of Ishan Kishan at number 4, given that he still has 48, 49 का जो भी average था I Shreyas Iyer का think before that. as a starter, so For I don't feel like कि वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल ही दिखेंगे, बट जिस मोमेंट पे जिस इन तीनों में से किसी का भी एक फॉर्म ड्रॉप हुआ तो फिर ईशान किशन कैन बैट एट टॉप, कैन बैट इन द मिडल ऑर्डर, सो लाइक because अगर वर्ल्ड कप में right now, फॉर्म नहीं होगा तो आई थिंक आई no, वोंट no, माइंड बिकॉज अगर नाम देख के तो अगर प्लेयर्स चुना है तो दैट रियली डजंट मेक सेंस, आप यू हैव टू गो हॉर्सेस फॉर नहीं कॉर्सेस नहीं वर्ल्ड कप के नाम पॉइंट ऑफ वाली व्यू बात से नहीं है या नाम वाली बात नहीं है सॉरी अंकित बट वो जो श्रेयस अय्यर जब बैटिंग करने आया था या इन द फर्स्ट गेम probably he looked the most settled out of या every batter till that time. No, I do Okay, feel and like all of them are going to start. Like Shubman Gill, I don't think ईशान किशन will start. But जिस मोमेंट पे 10 मैचेस है, 10 मैचेस में से तीनों का फॉर्म अच्छा रहना तो बहुत like I don't feel that is पॉसिबल going क्यों to नहीं है happen because अय्यर एंड राहुल तो रिकवरी से आए. But I feel जिसका फॉर्म खराब होगा, I think ईशान किशन will be the direct choice, irrespective of the position. I feel. हर्षल would you drop श्रेयस अय्यर at number 4 right now as well अगर एक दो मैचेस में मौका नहीं मिला तो No, मतलब no, फॉर्म no, अच्छी no, हो no, no. No, no, no. I won't drop Shreyas Iyer. As I agree with you, as I agree with you in the first game against Pakistan, he looked more settled than the top three when the ball was swinging, and that's his. that's it, मतलब उसका कंसिडर किया जाता है कि वो उसका एक वीक पॉइंट होता है कि वो पेसर्स को स्विंग हैंडल कर सकता है और हमको ये चीज नहीं बोलने कि श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन इंडियन क्रिकेट. अगर आप उनका देखो कहीं पे भी आप कोई भी इनिंग्स कोई भी फॉर्मेट में उठा लो उन्होंने स्पिन को डोमिनेट किया है. मैं आपको बहुत सारी ऐसी इनिंग्स उनकी बता सकता हूँ अभी गिना सकता हूँ कि उन्होंने जहाँ पे स्पिन को जहाँ बॉल रैंक टर्न होता है फिर भी उन्होंने डोमिनेट किया तो उनकी कला है वो. एंड आई डोंट थिंक कि एक गेम के बेसिस पे आप किसी को इतना जज करोगे. हम ईशान किशन को एक गेम के बेसिस पे जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. हम ईशान किशन को फुल कोर्स में जैसे वो वेस्ट इंडीज सीरीज खेले जैसे वो अभी फर्स्ट गेम खेले तो आपको दिख रहा है कि उसमें वो मेच्योरिटी आ रही है जो मेच्योरिटी हमको पहले नहीं दिखती थी. तो हम इसीलिए उन्हें बैक करेंगे. तो केएल राहुल का वापस आना it would take a miracle for him to get into the 11 if you ask me because right now कोई भी पोजीशन में मुझे नहीं दिखता केएल राहुल straight away walks in into the 11. So I feel like कि अगर आपको ट्राई करना है केएल राहुल को then only you will drop ईशान किशन. Otherwise ईशान किशन को ड्रॉप करना makes no sense right now. You cannot drop Shubman Gill also because even if he didn't score today, even if he got out on a duck today, I would still back him in full Asia Cup because I still feel that he has that quality and he has shown that quality in the past. So we have to go with the quality now. अभी थोड़ा उनको फॉर्म आने दो बट जैसे ही वर्ल्ड कप आता है मैं अभी सिर्फ होप करूंगा कि इंडियन टीम जिसके पास अच्छा फॉर्म है उसे खिलाओ बिकॉज फॉर्म मैटर्स अ लॉट. एंड हमने देखा ये इंग्लैंड को करते हुए, हमने देखा ये ऑस्ट्रेलिया को करते हुए और हमने देखा है ये दोनों टीम को सक्सेसफुल होते हुए आईसीसी टूर्नामेंट्स में. या आई एग्री क्योंकि वो जो इनिंग्स थी पाकिस्तान के अगेंस्ट इट फेल्ट जो मैच्योरिटी की हम जो बात करते हैं ना व्हाट ईशान किशन इज लैकिंग अ बिट इन हिज अर्ली डेज वो दिखी प्रॉपर्ली इन द गेम अगेंस्ट पाकिस्तान एंड pretty much well supported by Hardik Pandya as well क्योंकि हार्दिक पांड्या की ऐसी इनिंग्स तभी आती है when his back is against the wall. I mean we all know कि इसके पहले जो भी वेस्ट इंडीज में जो भी हुआ the comments made by him as a captain or whatever but there was a lot of I don't want to use the word but it is hate against negative image of Hardik Pandya was circulating a bit around him on social media. तो नहीं उनके लिए भी बहुत जरूरी था coming out from that all of that and proving everyone that he is an important asset. And हर्षल मैंने तेरा ट्वीट पढ़ा था if I'm not wrong तूने बात करी थी ना कि हार्दिक पांड्या is going to be the MVP of India. I think ट्विटर पे तूने ट्वीट करा था कुछ तो but anyways moving forward India needs कितने चाहिए और 12 रन चाहिए खाली और 30 बॉल में
सो आई थिंक वो तो बन जाने चाहिए अभी, इतना But I तो think, हम I इतने तो wanted to just ask the question because this debate related to number 5, number 4, like what times होता है, like let's assume कि अगर श्रेयस अय्यर जो पाकिस्तान वाला मैच है वो नहीं खेल रहे होते और ईशान किशन 4 पे खेल रहे होते, केएल राहुल at 5, so would you bring back श्रेयस अय्यर in the team, and या फिर you would continue with Ishan Kishan's form? Like this is the question for both of you. Like anyone मेरे comment तो section में बता दो यार, like runs important है या फिर like what is the most important thing, like क्या होता अगर वो सिनेरियो होता तो? नहीं, मेरे लिए तो आई एम नॉट मूविंग श्रेयस अय्यर एट ऑल फ्रॉम नंबर 4, गिवन द फैक्ट ही हैज दैट, क्योंकि अगर कोई प्लेयर रहा है पिछले 1.5-2 साल में जब से हम वो नंबर 4 का स्लॉट ढूंढ रहे हैं, आई थिंक श्रेयस अय्यर इज द ओनली प्लेयर हु हैज टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक हिज स्पॉट हिज ओन. आई जस्ट फील ही हैज दोस नंबर्स टू बैक हिमसेल्फ एज वेल. एंड ये ऐसा नहीं कि हम छोटा सा सैंपल साइज का बात कर रहे हैं. आई थिंक Shreyas Iyer has performed consistently well at number 4 for Team India, which not others have done. So I just feel Shreyas Iyer को वहाँ से हटाना on the basis of 1 or 2 games is justifiable. But yeah, I think for me number 4 is fixed. ओपनिंग में तो मैं शुभमन गिल का ही हम लोग तब से बात कर रहे हैं. यस, वेस्ट इंडीज में थोड़ा क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे बिकॉज, बट लेट्स बी ऑनेस्ट एज वेल कि the pitches there are not that easy to bat on as well. Okay, everyone struggled pretty much apart from Ishan Kishan. So I just feel वो एक पॉइंट उठाते लोग कि यार रन नहीं बने वेस्ट इंडीज में, तो आई थिंक शुभमन गिल को हटा के ये कर लो. we need to understand that this is a fixed set of players which we have right now, and every player is very important moving forward in the next 3 months. Could be anyone, could be our backup bowlers, could be our backup spinners, could be our backup batsman, anyone. जिसको भी चांस मिल रहा है, we have to back them moving forward, because उससे प्रॉब्लम ये होती है कि right now what it is happening is सोशल मीडिया की वजह से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फैन इन्वॉल्वमेंट फॉर द प्लेयर्स. एंड ऑफ कोर्स हर्षल, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विद मी और नॉट, प्लेयर्स को समझ में आता है कि बात क्या चल रही है इन द आउटसाइड क्रिकेटिंग वर्ल्ड. एंड अपने फैंस, आई थिंक इंडियन फैंस आर, I wouldn't say everyone, but there are a lot of Indian fans who are a bit impatient with the team at this moment. So I just feel A lot this of. is yeah, I think I mean lot तो मेरे को बोलना नहीं है because anyways अपनी population कुछ ज्यादा ही है. But I just feel this is what we should not do in the next 3 months, क्योंकि Virat Kohli himself has come out and said no one wants to win this World Cup more than the players. So I think that itself explains that this is the group which we have and we need to back them. Apurva is asking a Yeah, question I here. think या अपूर्वा, मैं इसी पे थोड़ा, जब एक कमेंट आया तो मैं थोड़ा फंस गया. मैं बोला यार, गायकवाड, इन व्हाट सेंस वुड यू पिक गायकवाड ओवर गिल? व्हाट हैज गायकवाड डन दैट यू वुड पिक गायकवाड ओवर गिल? See, I know I can understand the impatience of the Indian fans for the amount of Shubman Gill's failure in the West Indies series. बट आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज में पिचेस इतनी अच्छी नहीं थी यार. आपको, आप बताओ, ईशान किशन के अलावा और कौन सा ऐसा बैटर है जिसने आके बोला अरे यार मैंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है वेस्ट इंडीज में, आप देखो मेरा रन्स देखो, वहां पे एक इनिंग्स खेली रहेगी. सूर्य कुमार यादव ने भी पूरे टूर में एक अच्छी इनिंग्स खेली है, तिलक वर्मा ने 2 अच्छी इनिंग्स खेली है. तो वैसे ही हो गया, क्योंकि हमेशा आपको पता है वेस्ट इंडीज में आपको पिचेस बहुत ज्यादा रगड़ मिलती है. एंड कभी कभी अगर आपका लक नहीं चलता है तो वेस्ट इंडीज ऐसी पिचेस है वहां पे कि आप तो फिर आउट होते रहोगे वहां पे. मैंने नहीं देखा कि किसी को फॉर्म रिगेन करते हुए वेस्ट इंडीज में. तो मेरे हिसाब से तो वेस्ट इंडीज का हटा दीजिए. अगर आप अभी देखो, धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है शुभमन गिल बरोबर से, और हम सबको पता है शुभमन गिल हैज दैट पेडिग्री इन हिम कि वो बड़े गेम में चलना. हमने आईपीएल में देखा उनको, आईपीएल में वो बड़े गेम में चले, वो बड़े गेम में उन्होंने अपने को दिखाया है कि आई कैन परफॉर्म. एंड मेरे को वापस आना है वो हार्दिक पांड्या के टॉपिक पे, बिकॉज मैं ट्विटर पे भी बहुत देखता हूँ एंड आई सी अ लॉट ऑफ स्लैंडर फॉर हार्दिक पांड्या बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड. एंड आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, अगर आपको है तो. बट व्हेन इट कम्स टू हिज एबिलिटी इन प्लेइंग 11, he's dropped down my first name in the 11 because he bonds our 11 perfectly. आपको एक बैटिंग ऑप्शन देता है, आपको एक बॉलिंग ऑप्शन देता है, आपको एक फील्डिंग ऑप्शन देता है. इससे बेटर आपको ऑलराउंडर नहीं मिलेगा ओडीआई क्रिकेट में अभी इंडिया के सर्किट में. तो जस्ट चेरिश हिम दैट ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया. आप देखो द अमाउंट ऑफ इनिंग्स ही हैज प्लेड इन द लास्ट 1 ईयर. हम सब भूल जाते कि इंग्लैंड जो हम लोग 10 विकेट से हारे थे, हम लोग को रिस्पेक्टेबल टोटल पे कौन लेके गया था? हार्दिक पांड्या था जो हम लोग को वो रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गया था. हम सब हमारा बोलते ना, हमारा मेमोरी बहुत कम है. इंडियन फैंस का मेमोरी बहुत ही छोटा रहता है, जो जल्दी जल्दी वैनिश कर जाता है. जो लोगों ने किया है ना उसको याद नहीं रखता है. अभी शुभमन गिल का ही देखो,
आईपीएल और प्री आईपीएल जैसे 200 पे 200 बना रहे, 100 पे 100 बना रहे थे अगेंस्ट क्वालिटी न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक। एंड अभी हम भूल गए कि यार शुभमन गिल को ड्रॉप कर दो, किसी और को लेके आओ। तो थोड़ा चांस देना पड़ेगा यार, ये इंडियन टीम है, हम लोग को थोड़ा चांस देना, थोड़ा बैक करना पड़ेगा प्लेयर्स को, कि क्वालिटी देखी जाती है कभी कभी आपके फॉर्म से ज्यादा, एंड क्वालिटी है इन प्लेयर्स में बहुत ज्यादा। Yeah, I think what also explains Hardik Pandya's, I mean, not the attitude in general, but the personality is 11-50 बनाए हैं, I think, if I'm not wrong, overall in 50 over cricket. 3 or 4 of them have come against Australia. 2 or 3 have come against England or something, and one against West Indies. मतलब, he has played and scored big runs against good bowling attacks, is what I'm trying to say. So I just feel the पाकिस्तान slander is a दो। bit, yeah, Pakistan as well. That कौन सी थी Champions Trophy 2017, I think, that was one of the good innings as well. So okay, moving on. Apura is also saying that he is reliable down the order. Yes, I completely agree. वेरी Uh, वेरी Hardik Pandya is neat. I think I agree with what Harshal said, each and every word. Now, एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी है, which is away from the Indian cricket, because I think कितने रन चाहिए हमें, और 4 या 5 रन चाहिए, 3 runs needed of 22 balls, and we'll win the game by 10 wickets, which is, I think, it is done and dusted. One news which circulated today apart from Team India was this one, जो कि मैं स्क्रीन पे लाने वाला हूँ. How आई good नो, is this? आई कैन गेस। I mean, of course you can guess, because इज इट गौतम गंभीर? ना 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 ना, वो उस पे भी आऊंगा मैं, but ओके ओके, this is what I want to talk about. How या heartening it इट्स, is to see. आई एम Yes, I शॉक्ड दैट think. ही इज बैक। एक्चुअली Yeah, अगर आप मुझसे पूछो, आई एम शॉक्ड बिकॉज द वे उसका नी इंजर्ड हुआ था, एंड यू सी कि ऐसी इंजरी को वापस रिकवर करने के लिए आपसे आपको कम से कम 6 to 7 months लगता है, एंड ही हैज मेड अ मिराकुलस कम बैक मैन। बट आई जस्ट yeah, होप दैट कि वो रस्टी ना हो, बिकॉज हमको पता है कि इंजरी के बाद जब भी कोई प्लेयर आता है थोड़ा रस्टीनेस दिखता है उसमें। बट केन विलियमसन इज इन द वर्ल्ड कप, दैट्स अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड कप अपेरेंटली, बिकॉज जो फैब फोर है, भले हम वो टेस्ट क्रिकेट के लिए मानते हैं, लेकिन फैब फोर अगर वर्ल्ड कप खेल रहा है तो इनके बीच में तो कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड केन विलियमसन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स कि जो न्यूट्रल फैंस है ना उनको देखने को बहुत पसंद आता है। एंड आई थिंक अभिनव एंड अंकित बोथ विल अग्री दैट केन विलियमसन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, जब वो यार खेलता मेरा, है, जब व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग, इज ब्यूटीफुल टू वॉच। I think Mera one of the favorite players like Kane Williams. I just feel the personality which he possesses on field is, because I felt a bit sorry for him in that 2019 World Cup. Not a bit, a lot of sorry for Kane Williams and New Zealand in general. But जो तूने बात करी ना, जो rustiness वाली, I don't think New Zealand cricket board is one of those boards who acts emotionally. उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, if they feel Kane Williamson is not going to score runs or he's not looking good, वो drop कर देते उसे. But Yeah. his inclusion, that too in a span of like 6 odd months, that is, like you said, it is a miracle, to be honest, the way he got injured, and the way, मतलब, लग रहा था कि he could be out for more than 8 to 9 months easily. Ankit, Yeah. Kane या Williamson is back in the World Cup. यार राहुल, ये सब हम बाद में करेंगे, विलियमसन इंडिया में नहीं चलता है and all, but he, just to see Kane Williamson back, and it's New Zealand and it's ICC event. Okay, so अब ये चलने ना चलने वाली बात तो हम वर्ल्ड कप के अराउंड ही कर पाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो कि how lightly we have taken New Zealand in the Yeah. past in ICC events. So I think that should answer your question. Yeah, हमसे Ankit. पूछो यार, Yeah, हमसे पूछो कि हमने कितना लाइटली लिया न्यूजीलैंड को। exactly. Yeah, Over Ankit. the years, actually, like not even या to ओवर द the ईयर। 21 का World Cup, then WTC final, like the team, and as Sabino mentioned, like Kane Williamson का, I guess वो first ही match था वो CSK अगेंस्ट, मैंने देखा भी था उनका जो इंजरी था, like it was, as Arshan mentioned, like expected नहीं था कि recovery है, but अभी I guess आप अभिनव वाज मेंशनिंग समवन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर किसने मेंशन किया था कि विलियमसन इंडिया में नहीं चलेंगे, वो तो बात ही नहीं है, लाइक दे डोंट नीड विलियमसन द बैटर, आई मीन चाहिए, बट विलियमसन द कैप्टन, आई थिंक उनका जो कद बढ़ जाता है सडनली, वो सिर्फ आपके साथ आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, एंड दैट्स द ओनली थिंग इज गोइंग टू प्ले थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आई थिंक Williamson the captain, I think he's going to be more impactful, and उनकी जरूरत ज्यादा है compared to, because New Zealand is a team, like उनको individuals की team नहीं है, they are a team like मुट्ठी बना के the kind of Superman punch and all, because they like to play as a team। हमने WTC में भी देखा है, आप फाइनल्स देख लो, इवन द वर्ल्ड कप T20 फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लाइक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द लीस्ट एनीवन वुड हैव एक्सपेक्टेड वाज न्यूजीलैंड प्लेइंग इन अ T20 वर्ल्ड कप फाइनल, लाइक
T20 फॉर्मेट Yeah. में हम उनको किसी ने फेवरेट्स भी नहीं माना था, बट दे डिड इट. सो आई थिंक केन विलियमसन द कैप्टन, बिकॉज इनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, लाइक डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स एंड ऑल लॉट्स ऑफ गुड प्लेयर्स, बॉलिंग भी अच्छी है. सो someone like him who can just guide the team, and even अगर इनका साधारण फॉर्म रहता है, still I don't think it will be a worry, because as a captain I think he will do well, and as a captain ही इनका पूरा गेम निर्भर रहेगा न्यूजीलैंड के लिए. अभी अभी Yeah, हर्षल and I एंड अंकित, think yeah, हाँ मैं I पूछ रहा think था he's कि someone like Ben Stokes, Virat Kohli type of a aura. कि जब अगर the boost England team has got with Ben Stokes coming back, you can see that we are seeing yeah, Ben Stokes has came back and all the other teams are like यार Ben Stokes वापस आ गया, he's a match winner. वैसे केन विलियमसन का है, केन विलियमसन इन दैट न्यूजीलैंड टीम, रिमूव केन विलियमसन एंड कीप केन विलियमसन, आपको दो अलग न्यूजीलैंड की टीम दिखेगी. बस वो नाम का जो खौफ रहता है ना, वो खौफ है केन विलियमसन. हमारे इंडिया में वो खौफ होता है बुमराह, कोहली, रोहित शर्मा. अगर आप इनको हटा दोगे ना, तो एक इंडिया का भी खौफ थोड़ा कम हो जाता है. तो मेरे हिसाब से वो जो खौफ है वो केन विलियमसन लाएंगे, भले उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. Yeah, and if I'm not wrong, मेरे को पता नहीं इसका सवा मतलब he is a part of the squad or not. England and New Zealand, they are playing 4 ODIs if I'm not wrong right Yeah. now. I think starting in the next days or so. And Yes. is Kane Williamson a part of the squad? No idea, because I guess the squad Yeah, was No, no, announced. So no. yeah, I'm exactly. not sure. Currently, Like I don't think he is. this, the Bangladesh Yeah, squad was announced. So I guess yeah, Ferguson is going to lead, but I'm not sure. But I think he needs some match practice. So they might play maybe one more series after the yeah, series against England. But उतना time भी नहीं है. I think first match है ना England New Zealand, like so. yeah. Yeah, the finalists of 2019 World Cup will kick off the 23 World Cup, and वो भी यार मोटेरा स्टेडियम, लाइक अभिनव एंड हर्षल, लाइक honestly, like मुझे उस टॉपिक की तरफ ज्यादा बात नहीं करनी है, बट लाइक द लीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो नॉन इंडिया मैचेस है, आई थॉट कि उस मैचेस में लोगों को आसानी से टिकट्स मिलेंगी, बट दैट्स नॉट द सिनेरियो. लाइक कंप्लीटली सबसे ज्यादा भरी हुई तो लाइक नॉन इंडियन मैचेस के टिकट्स आर लिटरली सोल्ड आउट. बट या Yeah, आई but थिंक also I think one thing which is going viral अभी social media पे, I don't know how true it is क्योंकि वो थोड़ा technical topic है, हम उससे थोड़ा दूर रहते हैं. I just feel if it is true that not all the tickets are released for the World Cup games, then हाँ it is a bit sad as well. I think if या that जो भी pictures on social media where मे people are saying 8,000 9,000 tickets ही खाली available थे online and that is the reason इतना वेटिंग टाइम लग रहा है. आई मीन किसी का तो मैंने पढ़ा था उसको 3 महीने का वेटिंग टाइम दिखाया यार. भाई वो वर्ल्ड कप के बाद देखेगा क्या वर्ल्ड कप? सो आई मीन That was edited one for sure. yeah, maybe, but I just feel you get my point, right? I mean, if there is no transparency in terms of, because it's a big event, it's a mega event, it's a showpiece event for ICC, and whenever cricket is happening in India, any ICC event is happening in India, it's going to be a huge success. We all know that before it has even begun. So I या just feel if it is true, then it is a bit sad for fans, especially who cannot get hands on those tickets. And क्योंकि हम लोग ऐसे है ना यार, cricket is like a religion to us. We don't especially when the World Cup is coming home, we want that streak to continue. कि यार 2011 में हमने शुरू करी थी that the home team started winning the World Cups in या their own backyard. India did it, Australia, England, and now it is coming back to India as well. So hopefully हमें continue रखें ये वाली streak. But yeah, I think only time will But I tell. think Uh, one thing we can say before we move on to other topics, yeah, like I think हमने बहुत सारे IPLs देखे, like over the years every IPL like 22 IPL, then 23 उससे भी अच्छा होता है, but I feel this mega event I think can be the blockbuster of all of them, like कि वर्ल्ड कप है 2 महीने, लाइक एंड घर पे इंडिया से भी उम्मीदें बहुत है, लेकिन बाकी टीम्स की तरफ भी सबकी निगाह है. सो लाइक आई थिंक दिस कैन बी द ब्लॉकबस्टर इवेंट. आईपीएल भी रहा है, बट मे बी फॉर द वन डे फॉर्मेट आई थिंक कैन गेट द बूस्टर गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज वैसे भी कम होने वाले. सो समथिंग गुड टू फिनिश दिस काइंड ऑफ एन इवेंट ऑन अ हाई नोट. आई थिंक वनडेज की भी थोड़ी वापसी हो सकती है, यू नेवर नो, बट आई एम होपिंग कि एक बहुत अच्छा और एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहे एंड मे द बेस्ट टीम विन. या क्योंकि वो जो तूने बात करी ना कि वनडे की वापसी हो सकती है, आई काइंड ऑफ फील एंड अग्री टू दैट. क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना शुरू किया था, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लोग बात करने शुरू हो गए. तो मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ देख रहा था यहाँ पे मैच, एंड दे वर लाइक
यार हमें आदत ही नहीं रही 50 ओवर क्रिकेट देखने की. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट Yeah. वाज लाइक यार कितने सिंगल हमें And you know कितनी the आदत one लगी. thing, sorry to cut you up, like I guess वो सोशल मीडिया पे विराट कोहली एंड हारिस रॉफ का एक कन्वर्सेशन भी आता है. विराट वाज Yeah, मेंशनिंग कि वनडेज को खेलने की भी जरूरत थोड़ी है. सो दैट वाज मेंशनिंग कि प्लेयर्स को भी खेलना है, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस एंड ऑल ऑफ थिंग्स इट्स नॉट हैपनिंग. बट वी होप true. कि यार ये फॉर्मेट भी उसी लेवल पे रहे जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट एंड T20 है. सो यस, Yeah, it is फिंगर्स क्रॉस्ड. important. Yeah, for us, World Cup is not the Test Championship or the T20 World Cup. For या World Cup, अपने लिए is the 50 over World Cup, जो कि that is the history of the World Cup itself. बाकी formats आएंगे जाएंगे हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, because this या format should stay. I think आपको करने के लिए आपके T20 क्रिकेट कम करना है आप कर दो, but 50 overs ODI World Cup and 50 over cricket should still be a huge part of international cricket. Okay, moving on. There is one final topic जो हम डिस्कस करने वाले, जो कि हर्षल ने गलत गेस किया था, अब वो दोबारा सही गेस करेगा. So I just feel this. Is there a need to address it? I don't know, but yeah, we all saw what a video getting viral of Gautam Gambhir today on social media. He has clarified it, coming out and saying that the crowd was shouting anti-India slogans. As an Indian, I can't take anyone saying this about my country. Hence, he reacted in that way. What you see on social media isn't always a correct picture. Okay, so this is what he has said. I'm not talking about what he has said, what he has done. Was it right to do that? Is my question. Harshal? If what he's saying is true, then what he does is right. बिकॉज Okay. अगर जो आपने वीडियो देखा हमको ये भी पता है कि वो वीडियो किसने वायरल किया है. ही इज द गाय फ्रॉम पाकिस्तान, उसने वीडियो वायरल किया है. एंड बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियो है. मतलब जो वो वहां पे स्टेडियम में भी थे वो लोग भी बहुत बोल रहे हैं कि कोहली धोनी के चांस इतने हुए नहीं थे. एंड जो फुटेज भी आ रहा है वो इंडिया पाकिस्तान के गेम का है, वो आज के गेम का नहीं है, वो इंडिया पाकिस्तान के गेम का है. सो आई डोंट नो यार, मतलब सोशल मीडिया अभी इतना आगे, ये अपना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया ना कि हमको पता नहीं चलता कि कौन सा चीज सच है कौन सा चीज गलत है. बट आई वुड टेक वर्ड फॉर गंभीर. अगर गंभीर बोल रहा है तो आई वुड टेक इस वर्ड, या वही चीज हुआ रहेगा. बट आई डोंट नो यार, क्लियरली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे को नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है. और अगर वो Yeah. इंसान आके बोल रहा है कि ये चीज हुई है तो मैं अग्री करता हूँ उससे कि भाई हाँ हुआ है. और जो या Yeah. वो एक बोलते हैं ना इंस्टिंक्टिव है कि अगर आपको कोई Exactly. गाली देता है ऐसा करता है तो अपना गाली निकल जाता है मुंह से, तो इंस्टिंक्टिव हुआ रहेगा उसका. बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर जब वो आया पहले वीडियो, एंड आई वाज वेरी एंग्री कि हाउ कैन अ एक्स प्लेयर शो मिडिल फिंगर फॉर समवन हु स्टार्टिंग अ नेम ऑफ कोहली और धोनी एक्सेट्रा. मुझे बहुत इलॉजिकल भी लगा कि धोनी गंभीर को बहुत डिफरेंसेस है. इन गंभीर ने कभी भी ऐसा कोई मिडिल फिंगर या गालियां ऐसा वैसा नहीं बकी है. तो अगर उसके अगर आप कोहली या धोनी के नाम चांट करो तो. बट ही हैज टू कम आउट एंड क्लैरिफाई दिस. एंड दैट्स द थिंग. अगर उसका क्लैरिफिकेशन अगर सब लोग को या अच्छा लग रहा है, मेरे को तो सही लग रहा है कि अगर उसने बोला है तो मैं मान रहा हूँ उसकी बात. बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ Yeah. गई है ना कि किसी को पता नहीं क्या सच है क्या गलत है. Yeah, I mean, क्योंकि in the end it's a human nature, and गंभीर का नेचर ऐसा तो नहीं हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा कुछ. We all know how Gautam Gambhir has been over the years. He's coming hard on his face वाला एक personality है. So I just feel he is that kind of guy या जो अगर उन्होंने ये कहा है, I यू don't नो think he's lying. I just feel yeah. आई फील लाइक कि irrespective ऑफ द लाइक कुछ भी हुआ हो, लाइक कुछ भी हुआ हो, कुछ भी बोला गया हो, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि क्या है ना, एक चीज अब सोशल मीडिया की वजह से, लाइक इवन अर्शल मेंशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल, आगे इतनी बढ़ चुकी है. अब फैंस तो लाइक ऐसा लगता है कि 24/7 कैमरा रखते हैं बिकॉज दे वेट फॉर समथिंग टू हैपन, एंड हो ही जाता है कुछ ना कुछ जो फिर वो ट्विटर पे फैल जाता है. देन इंस्टाग्राम एंड ऑल लॉट्स ऑफ स्टफ्स आर बीन टॉक्ड अबाउट इट. आई फील कि कुछ भी बोला हो, या आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट टू डू. बिकॉज इंडिया में सच क्या है, लाइक रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, या फिर जनरली कह रहा हूँ, आई थिंक कि सच अपना रास्ता चला जाता है ना, तब तक झूठ ने अपने 2 चक्कर लगाए होते हैं. एंड इंडिया का वाह लाइक वाह ये वाह. होता है, क्या लाइक बात है. है, वाह. लाइक बिकॉज ये होता है वाह. इंडिया में. दिस इज द ट्रूथ. लाइक आई थिंक वी शुड मेड अ ट्रू है यार. दिस, गजल लाइक लाइट थोड़ा में आपने एड्रेस, स्वागत है. बट Yeah. दैट्स द ट्रूथ. But दैट्स see, व्हाट, the बिकॉज point is that कि गंभीर जो फैंस है, जो फैंस का उन्होंने या उधर ये भी लिया है तो वो भी दूध के धुले हुए तो नहीं लगते मेरे को. कि दैट कि उन्होंने जो या वो बोल रहा है वो सच भी नहीं है. कि अगर आप इंस्टिगेट करते हो उसको तो मेरे को लगता है कि वो सिर्फ कोहली और धोनी के चांद से इतना इंस्टिगेट हो गया रहेगा. एंड ऑफ कोर्स Yeah, दे आर yeah. पाकिस्तानी फैंस. हमने देखा है कि वो बहुत इंस्टिगेटिंग करते हैं इंडियन प्लेयर्स को भी. हमने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में भी देखा था जब मोहम्मद शमी लड़ पड़े थे एक पाकिस्तानी फैन से. बिकॉज वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना बदमाशी कर रहा था वहां पे. सो आई डोंट नो यार, मतलब ये टॉपिक को भी साइड में भी रख सकते हैं हम लोग कि हाँ हो गया ये गंभीर ने किया. लेकिन अगर
जो बात सच है और उसने दिखाया तो मैं तो बहुत खुश है यार कि आपने दिखा दिया, Yeah. आपने अपना दिखा दिया कि भाई मेरे को नहीं समझ, मेरे को नहीं पसंद है ये सब चीज। खुश तो मैं खुश मतलब वैसे तो नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर प्लेयर्स इन द, आई मीन इफ यू सी द ओल्ड इमेजेस, ओल्ड वीडियोस यूट्यूब पे जाकर आपको बहुत मिलेंगे, यू नो, अ लॉट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स आर इन्वॉल्वड इन समथिंग लाइक दिस. I think there Yeah. was some incident involving Virat Kohli and the crowd as well at Wankhede when they lost to Chennai or something Mhm. in the Yeah. IPL as well. Then there was a video of Rohit Sharma, you know, during a net session in Australia. So I just feel थोड़ा ज़्यादा उसका issue बन गया, and I think Gambhir has all the right to come out and justify his response, Mhm. Yeah. because if this is what it is, then I think it's human nature. I mean, हमसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, and maybe it could be one of those things which Mhm. Gambhir might regret moving forward. But anyways, this is all we had on today's show. Once again, we discussed pretty much everything. कल टीम इंडिया अनाउंस हो रही है यार फॉर द वर्ल्ड कप. Will there be another Vijay Shankar? Will there be another Yuzachal exclusion? Will there be any other big यार surprises एक जो हमें फाइनल हमारे क्वेश्चन बिफोर वी एक्चुअली रैप अप यार, आई मीन कमेंट सेक्शन में भी अगर जो लोग देख रहे हैं बता दो, बिकॉज ये तो फाइनल टॉपिक है। एक ही चांस है, लाइक बहुत जल्दी आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट गो विद, चलो अल्फाबेटिकल जाते हैं। अभिनव, 15 मैन स्क्वाड है। एक ही जल्दी, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर क्विकली। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा। तिलक और अब है पागल है क्या? अब नहीं, आई जस्ट फील ये नहीं, आई जस्ट फील एक बॉलर की जगह तिलक वर्मा का नाम आएगा. दैट इज माय, आई थिंक मेरे को लग रहा तो किसी फास्ट बॉलर का नाम लेगा. आई जस्ट फील एक बॉलर को हटा के हम शायद तिलक वर्मा को ले जाएं या एक बैट्समैन को तो ले नो जाएं. स्काई ओनली जस्ट टू बिकॉज, कंफर्म, सॉरी, नो स्काई जस्ट टू कंफर्म, नो सूर्य कुमार। देख मेरी 11 में तो सूर्य कुमार यादव है नहीं. ओके, एंड आई जस्ट फील केएल राहुल, अभी जो 11 चल रही है उसमें केएल राहुल का नाम नहीं है, सो आई फील केएल राहुल का नाम आएगा. देन संजू सैमसन का नाम आई डोंट थिंक आने वाला है इन द स्क्वाड इटसेल्फ. या। चहल, आई डोंट नो एक्सक्लूजन के बाद तो उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा आफ्टर द एशिया कप. I mean, it's a tough one, but I just feel कि तिलक वर्मा को the way these guys have backed, there is a high possibility his name could be in the squad. Yeah. ऑल राइट हर्षल, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, I one of them. I will take two names which will go out of the current 17-man squad, and that's Prasidh Krishna and Tilak Verma, and that the remaining would be the 15-man Is it squad. 17 or 15 just to confirm? Like I guess 15 है 15 ना? पता नहीं जितना भी रहेगा, अभी जितने ज्यादा 15-man होंगे. squad for the World Cup. For the Asia Cup, it's Yeah. 17-man squad. So I'm removing two players. Tilak Verma and Prasidh Krishna goes out, and the remaining 15 players are the same. अच्छा, okay. So Surya Kumar Fair enough. retains the spot in the squad for Yeah. Harshal. Yeah, I think All so right. that if you want to take someone with little bit experience. मेरे को नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल जिसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है Yeah. आप उसको लेके जाओ सीधा वर्ल्ड कप में. आई वुड होप कि संजू सैमसन को चांस मिले, लेकिन नो चांस संजू सैमसन आ सकता है अभी. सो मेरे हिसाब से तो आई वुड पिक सूर्य कुमार यादव अबव तिलक वर्मा राइट नाउ. Yeah. All right. Yeah, fair enough. Okay. That justifies. Yeah. So that was it, yeah. Everyone in the chat, thank you so much for joining us. Thank you so much, Harshal. Thank you so much, Ankit. Tomorrow the team will be announced. हमने तो खाली अपने prediction बनाए हैं अभी तक यहाँ पे. The team will be announced tomorrow. Do join us. We will discuss the entire team. I think we pretty much know what the squad is, but with this board and with the Indian team, you never know कब एक रातों रात एक 3D या 8D player पैदा हो जाए. So we just hope this is not the case this time around, and we know what the thinking is behind each and every player ka selection. So we'll discuss that tomorrow. Till then, take care. Good night. We'll see you guys tomorrow. Bye. Yeah. Cheers. Yes.